हम बस में जाएंगे? हाँ बस में ही पहुँचे। फिर गाड़ी में ही चले जाते। नहीं पता ना कहाँ पे हो। Hello and namaste people, it's me Nikita Yadav and this is my channel Slightly Bookish. As most of the people watching this video might know that in our country to participate in any medical or allied courses we have to give this exam called Neet and then we participate in the counselling through which we are allotted colleges. There are many rounds and I was in round 1 allotted the college KMC Manipal, which was obviously one of my dream colleges. So then you can decide if you want to physically report there and take that seat or you want to skip it and participate again in round 2 or physically report and then opt in for upgradation, which is what I did. As the title suggests, this is a video about just that. This was actually my second time traveling on an airplane ever because my first time was when I was actually 2 years old and I don't remember anything about that. One of the things that surprised me the most, which I kind of expected, was how expensive, insanely, ridiculously expensive everything is in the airport. So it was getting pretty late and we had to wait for our plane because we were pretty early. So we had these basic rules and then we boarded this bus which took us from the boarding gate to the airplane. It was kind of a bummer that it was night time, so we couldn't really see a lot of the airport and the scenery and, just look around, have that experience. So while we sit in the plane and travel to Manipal, I'm going to tell you my thoughts on the counseling process because I am pissed. I'm really pissed. Everybody knows that Indian education system is a mess and it is really unfair how bad it is, especially for people, for doctors and dentists, the people who are there to save lives, who have I think pretty important jobs. The counseling process is probably the most tedious thing to ever happen. It starts after 2 months after the exam. I'm why are we given so much of free time? Why waste so much time, first of all? And then the process is just so long and tedious, and how am I supposed to know what a college in Tamil Nadu is like or what a college in place in Chhattisgarh is like when I'm sitting here in Gurgaon, solely based on maybe how it's ranked or online reviews? I talked to one of my relatives about this, who is also a doctor, and he is actually a very old one. So he told me how in his time the counseling process was solely based on you reaching whatever college was nearest to you, and I think that was probably one of more simpler things. And I also understand we have a lot of population, so that's probably not feasible today. Another point which I think every single student in our country would agree with is why do we still have this reservation system? It is so unfair. There is sometimes a difference of 50, 100 or even more marks for the same seat for the same college. A student from, say, general category has to work so much more harder. It is just not fair. Let's just say that. I could rant about this probably the whole day. Now let me just shut up for a second and see this amazing view. When the plane takes off, it is such a surreal feeling. It's almost as if you're about to fall off from a amusement park ride. The speed is so much, you literally feel that thrust in your chest as you're pushed back to the seat and as the plane lifts up. It's such an amazing feeling.
It is probably cringy how excited I was during the whole time. I mean, the sunrise is to die for. The sky was just so beautiful, and this video with the camera of my iPad just does not do justice to how beautiful everything was. We first landed in Bengaluru, where we had a layover, and then we boarded a flight to Mangalore, where we landed at about 6 in the morning. The weather was beautiful at Mangalore. I mean, it was kind of rainy, kind of humid, but it was really calm and just cool and very silent as compared to the bustle of the city. That is for sure. We then took a cab to Manipal and reached there at about 8:30 in the morning, and we had a lot of parents sitting around us, but the process had to start at 9:30. So we did some time pass. We actually went to the college mess to have our food, and also to test out what I would be eating for the next 5 years. And the food was pretty decent, just like ghar ka khana, nothing too oily, masaledar. It was pretty good to taste. Then the main process of counseling started, in which they verified all our documents, asked us to fill this non-discontinuation bond. Let's pause for a second and look at the beautiful campus. I mean, this area was so pretty. It was like full of greenery, and this is the administrative building and the library on the side, around which we have the lecture halls and then the hostels and the mess and everything. This is Indra Block, the girls' hostel. So yeah, back to the process. After that, we had just a few rounds of filling forms and doing this and that, going back and forth from one counter to another. But the process did not take very long, about I think an hour and a half, which was not as much as I had expected initially, because they told us to come with a window of at least 5 to 6 hours because the process could take that long. The whole thing ended and it wasn't even 12 o'clock. Then we decided to explore the area a little, and then we went to a beach. This is Malpe Beach, which is 10 to 15 minutes away from the main campus. It was a beautiful and actually a very clean and pretty beach. It was a nice windy day, not too sunny, not too cold. It was just pleasant enough for us to walk around, enjoy the view. It was also my first time at a beach. So many years living in Gurgaon, you don't see such a huge water body, and that feeling that you get when you look across the horizon for the first time, it's really so beautiful. We roamed around the beach for about an hour and then went back, where we booked our hotel. Now, one thing that I would like to point out is that all the hotel people, owners, knew that this was their peak seasons, when every parent comes for admission, and they really took advantage of that by raising the room charges, which they themselves admitted that they were doing. Otherwise, it was a pretty comfortable stay, and we slept very tight because we were so tired, and also because we hadn't slept the last night. The next day we woke up and went to Smriti Bhavan, which is actually the home-turned museum of Dr. T.M.A. Pai, the founder of the whole Manipal Foundation. The museum was beautiful, it was well maintained, and we learned a lot about his life and all his achievements, all his accomplishments. Pretty eventful indeed.
तो अब हम बैठे हैं मणिपाल के रिसेप्शन के पास, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। और मैं पापा से पूछूंगी कि पापा आपको क्या लगता है कि आपको कॉलेज कैसा लगा, और हम क्या यहीं रहेंगे या राउंड टू में कोई दूसरा कॉलेज स्विच करना चाहिए। In my opinion, I like it very much. This education institute is high ranking and it is very far from us. That's the only reason. मम्मी आप कुछ कहना चाहिए? नो कमेंट। ये तो मेरी बात सुन के असर लग रही है। मुझे इतनी इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना, इसलिए मैं नो कमेंट्स। मेरी एक ही सजेशन है भारत सरकार के लिए कि दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ पे होनी चाहिए, तो बहुत ईजी हो जाएगा सभी के लिए। बस अभी भी डायरेक्ट फ्लाइट है, बस पैसे होने चाहिए। भारत सरकार को बोलो कि आपको थोड़े पैसे उपलब्ध करो। नहीं, अरे है डायरेक्ट फ्लाइट, डबल प्राइस की थी डायरेक्ट फ्लाइट। अगर ये हम आए 6,300 की थी ना एक बंदे की, वो थी कुछ 12,400 की, कुछ ऐसी की थी। एक तो डायरेक्ट फ्लाइट कम है, कुछ डेट्स को है और महंगे है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये इसकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसके साइड में एक लाइब्रेरी है, और ये मम्मी है। और अभी हमारा सारे एडमिशन का प्रोसीजर जो है सब ख़त्म हो चुका है, और अब हमारी फ़्लाइट एक्चुअली हम 6 बजे निकलेंगे। हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम था, कुछ करने के लिए नहीं था, और हम बीच ऑलरेडी जा चुके थे। तो अब हम यूँ ही बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, कैंपस देख रहे हैं। मम्मी पापा हम अभी म्यूजियम ऑफ एनाटॉमी देख के निकले, आपको कैसा फील हो रहा है? तो मम्मी बताइए कैसा फील हो रहा है? ऐसे फील वील कुछ नहीं हो रहा, मतलब देखा तो गुस्से तो लग रहा था कि हाँ देख लेंगे, पर जल्दी से देख के निकल गए। ऐसे मतलब कुछ क्या बोलूँ, मतलब मज़े से नहीं आए या कुछ और, क्योंकि मेरे टाइप का नहीं था वो, या मैं नहीं देख सकती थी ऐसे बॉडी पार्ट्स, छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक एक पार्ट्स को दिखाया गया है, ओपन भी, कट ऑफ करके भी, तो ये बच्चों को सीखने में बहुत मदद करेगा ये। मुझे तो कुछ खास अजीब सा फील हो रहा है कि मैं क्या देख के आई हूँ, जो मैंने कभी देखा नहीं, अरे वो देख के आई हूँ। गंदा तो लग रहा है, एकदम गंदा सा तो नहीं, पर हाँ कुछ लग रहा है, अजीब सा कुछ फील हो रहा है कि कुछ तो। आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बट थोड़ा कोई सा ठीक नहीं लग रहा, कह रहे थे चलो चलो यहाँ पहले से से चलो। थोड़ा सा मन खराब हुआ देखने के बाद। नहीं कोई ठीक नहीं लग रहा है। तेरे पापा को अगर अच्छा लगता तो कहते रुको मैं और देखूंगा, अच्छे से देखूंगा। तेरे पापा ने कहा नहीं चलो चलो चलो, क्योंकि देख के थोड़ा जी खराब। डर लगा कि क्या? नहीं, डर नहीं लगा, साफ सुथरी बॉडी थी ना, जैसी सबकी बॉडी है होती ऐसी बॉडी थी, उसमें डरने वाली क्या वहाँ पे जो एक्चुअल ह्यूमन बॉडी थी उसको देख के कैसा लगा आपको? नहीं, पहले मुझे डर लगा था कि शायद मुझे डर लगेगा, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल था। मेरा तो ऐसे ही वो जैसे हॉरर मूवी में सीन नहीं होता कि जा रहे हैं, फिर अरे ठीक है, ये तो ऐसा ही दिखता है। मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी अभी उठेगा और ये दरवाजे बंद हो जाएंगे और ये उठ के बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसकी आँख भी खुली थी ना। नहीं, आँख बंद थी, बंद थी आँख, बंद थी। या आपको खुली दिखी? खुली दिखी डन मम्मी को खुली आके दिखी। नहीं, कभी मैंने उसे देखा और एकदम इसलिए मुझे डर लगा उससे।
आज तो मम्मी ने पहली बार समुंदर देखा मणिपाल में, उसके बारे में कुछ स्टोरी बता रहे थे आप। मैं स्टोरी ये बता रही हूँ कि मैंने कम से 25 साल पहले जब हम एक बार कैंप में आए थे, तब मेरी इच्छा थी कि मैं समुद्र देखूं, और मैंने अपने टीचर से बहुत रिक्वेस्ट की थी। हमारा कैंप था यहाँ एनसीसी का, कि सर हमें ले चलो, लेकिन उनका बना ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अलाउड नहीं है ये वो। तब की मेरी इच्छा अब पूरी हुई है। मतलब कि 25 साल हो गए लगभग। हाँ, 25 साल बाद मैं समुद्र देख पाई। और तेरे पापा की इच्छा थी, आपकी इच्छा थी समुद्र देखने की? मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ। ये एंड आई लव ओशियन। क्या बोला ये? क्या बोला? सही समझ आया। बार देखा था, ऐसे हम चल के जाते हैं ना, ऐसा एकदम से दिखता है कि तो वो इतना बड़ा है तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। जैसे अपने मोस्टली छोटी छोटी वाटर बॉडीज देखी है, ऐसे समुद्र को देख के बहुत ऐसा अजीब लगता है। मैं सोच रही हूँ ऐसा अच्छा, आपने क्या बोला था वो समझ नहीं आया। आई लव ओशियन। ओशन, आई लव ऑल सीन्स। ऑल सीन्स बोला आपने, ओशन बोला? ओशियन। ओशन पापा, ओशन। गाइस मेरे पीछे जो आप ये हॉस्टल देख सकते हैं, ये चंद्रशेखर हॉस्टल है। ये खाली बॉयज़ हॉस्टल है। आई थिंक NRI वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बजट बहुत ज़्यादा हो। तो अभी काफ़ी अच्छा ओवरऑल बताऊँ तो काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस था। मैं काफ़ी हेक्टिक सोच रही थी कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, 5-6 घंटे का काम होगा। जैसा मैंने लाइक ऑनलाइन था और हमने यहाँ फ़ोन करके पूछा था, तो वो भी ये कह रहे थे कि काफ़ी लंबा काम होता है, तो आप अच्छे से टाइम लेके आना। इसलिए हम 2 दिन की विंडो लेके आए थे कि हम 2 दिन रुकेंगे। और बट काफ़ी जल्दी काम हो गया। मेन एक्चुअली एडमिशन का काम तो आई थिंक 1 घंटा, मतलब मेन आई थिंक 2 घंटे में हो गया होगा। ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 2 घंटे भी, 2 घंटे में हो गया। तो काफ़ी लाइक ईजी था। अब हमने राउंड 2 में, वैसे राउंड 2 के लिए गेस किया है कि हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। एंड यस, इसी के साथ हमारी ट्रिप ख़त्म होती है। अब हम टैक्सी लेके मैंगलोर जाएंगे और फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट है हैदराबाद की, वहाँ पे लेओवर है, फिर हैदराबाद से दिल्ली, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी बहुत महंगी और हमें कंजूस। अब हम बैठे हैं, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। हम लिटरली रोड पर बैठे हुए हैं, पर रोड काफ़ी साफ़ है। तो और एक ये भी बैठा है हमारा एक नया फ्रेंड। कुछ कहना चाहेंगे मम्मी? मैं कपड़े भी सुखा रही हूँ। टी शर्ट गीली हो गई थी, तो हम उस टी शर्ट को सुखा रहे हैं ताकि एयरपोर्ट पर ठंड लगे तो फिर हम कपड़े लेयर कर। क्योंकि हम स्वेटर तो लाए नहीं यार, ठंड लगी तो हमें एक और टी शर्ट पहननी ठंड पड़ेगी। में मार देते हैं एयरपोर्ट में। और ये थोड़ी गिल्ली हो गई तो इसलिए सुखा रही हूँ रोड पे बैठ के ही मैं। क्या सुखा रहे?